Afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Afternoon. Ma'am, today I'm not able to switch on my camera, Aditya? so please mark my attendance. Aditya or Satyam? Yes, ma'am. Who is this? Satyam or Aditya? Ma'am, Aditya. बाकी लोग कैमरा ऑन कीजिए. फटाफट जल्दी जल्दी. Rest everyone switch on your cameras. We were discussing this is going to be the last class on performance appraisal. Fine. We have discussed one method of modeling, which is 360-degree appraisal. Now, in short, I'll tell you 360-degree appraisal is the most important method of performance appraisal, because when even 360 degree is not just a reflection of, is not just any method in the organization. Rather, this method of performance appraisal, if it is a method in the organization, it also speaks about the kind of organization culture an organization follows. Okay, the kind of culture that is existing in an organization is also reflected by 360-degree appraisal method. Because I guess you understand the fact that after having taught 360-degree appraisal method, you understand this fact very well that 360-degree is also one method which will regulate your behavior, not just with your seniors, but with your juniors also and with your peer group also. ये समझ में आया? Right? So ठीक है, तो बाकी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए. So, except Aditya, everyone please put on your cameras. That way, degree is an important method of appraisal. Many big organizations, I already gave you examples like Infosys, like Reliance Industry Limited. These organizations are carrying out its appraisal method by 360-degree method. There are two more methods which are to be studied in modern methods of appraisal. One is MBO, which is management by objective, and the second one is, what is the second one? BARS method. BARS method, ma'am. Yes, it is BARS, BARS, which is behaviorally anchored rating scale. Rating scale. 360 degree हो गया. अभी हम लोग BARS method पहले कर लेते हैं. BARS का क्या? BARS method का full form क्या है? Behaviorally anchored rating scale. Okay. Do you remember critical incident method from the traditional methods? याद है? Critical incident method क्या होता है? क्रिटिकल इंसिडेंट तुम लोग को अच्छा खासा समझाए थे क्लास में. क्रिटिकल इंसिडेंट क्या होता है? क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? कि तुम लोग आगे नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? पीछे कुछ समझा देते हैं, आगे पूछते हैं तो गायब हो जाता है. वो भी कोई पिछले महीने की बात नहीं है, एक दो क्लास पहले की बात है, वो याद नहीं रहता है. दिस मीन्स यू नेवर टर्न पेजेस. क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड नहीं समझोगे तो बार्स मेथड समझ में नहीं आएगा. Performance appraisal. What performance appraisal? This is critical incident method is a traditional method of appraisal. Critical incident method से भी performance appraisal होता है. Critical incident method का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि see, everything that you do in an organization is not critical in itself. Like every behavior of yours is not critical. But there are some behavior which can be counted as your critical behavior in the organization. Now, this critical behavior can be both in terms of good behavior and bad behavior. So the organization identifies a list of such behaviors, okay, and lists it in either good critical behavior or
Bad critical behavior. What could be good critical behavior at your workplace? Tell me. आप सुबह से शाम तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हैं, हर कुछ क्रिटिकल नहीं होता है. Like you're having fun with your peer group. This is not critical. This is okay. This is just a normal behavior. But a critical behavior could be you had a fight, you had a physical fight with your colleague. This is a critical behavior. Okay? You're not helping the colleague in carrying out the organizational process. This is a critical behavior. You're coming late for 10 minutes. That is okay. That is not critical behavior. So what is critical behavior? Critical का मतलब होता है नाजुक. अब ये नाजुक हमेशा गलत के सेंस में हो, यानी कि it always is directed towards something wrong. This is not the case. When we talk of critical method, this means either it is a good critical method or it is a bad critical method. So good critical method examples could be like, see, you understand change management? Change management. These days, the organizations are functioning in an extremely dynamic environment. You yourself witnessed the case of pandemic, right? And you yourself understood, rather you were at the receiving end of the impacts of pandemic. All your classes went offline, all your classes went online. This was also one of the impact of pandemic. You were at the receiving end. But the college was the organization. It had to continue. So it took out methods. It came up with methods that could continue imparting education to the students. Okay. So had this organization not been planning since before, it would not have been able to impart or continue education in that case of pandemic. Understood? So this is change. Change is very, very inevitable now. Okay, you should always have planning to reduce uncertainties to a great extent. But having said this, I also say that those organizations which seek stability or try to always maintain status quo will not be able to grow and survive leaps and bounds like the other organizations which consider change as a part of their planning. This much flexibility is always there in their planning. Understood? Now, change. Suppose the organization has come up with a new technology. Okay. Suppose there is a new method of teaching or a new method of working in the organization. There is a new software. Now you need to change your practices from the old softwares to the new softwares. In that case, you are resisting the change. Why has that change been brought about? Because somewhere it is directed towards more efficiency of the organization. But if you're resisting the change, this is a critical behavior. Okay? If you're not helping your juniors, this could be a critical behavior. Okay? You are in customer service and you misbehaved with the customers. Misbehaved with the customers. For example, you are in a hotel industry, a hospitality sector, and you misbehaved with the customers. This could be a critical behavior for the organization. Understood? So like these, there are 70 to 75 critical behaviors which are identified by the organization, both in terms of good behavior and in terms of bad behavior. And you are judged according to that. तो आपका performance appraisal इस पे depend करता है. Got it? A major drawback with this critical behavior is that what if the critical behavior has not taken place? तुमने वैसा critical behavior किया ही नहीं. जैसे सपोज करो कि मैंने 5 का लिस्ट बनाया कि ये क्रिटिकल बिहेवियर है मेरे लिए, और उस 5 में से कोई क्रिटिकल बिहेवियर तुमने किया ही नहीं, फिर तुम्हारी रेटिंग कैसे होगी? The other thing, when I am rating, I can be biased towards you. For example, अभिषेक ने अगर फाइट किया
किसी रूम टीममेट से, तो I will say कि no, this is not a critical behavior. I'll not mark you in critical behavior. And Pratyush का same behavior को I will mark in critical behavior. So there are fair chances of biases coming into this method. Okay. ये क्रिटिकल था. देखो इतना टाइम चला गया पीछे क्लास का समझाने में, जो हम तुमको ऑलरेडी समझा चुके हैं, इसीलिए क्लास उतनी तेजी से आगे बढ़ता नहीं है. अगर हम क्रिटिकल बिहेवियर छोड़ देंगे तो बार्स समझ में नहीं आएगा. नाउ coming back to the BARS method. BARS is behaviorally anchored rating scale. यानी rating method याद है? Rating method, do people remember rating method? वही बता दो कम से कम. क्रिटिकल इंसिडेंट थोड़ा टफ भी था. This is not good. Now this is really not good. ये तो क्लास आगे बढ़ ही नहीं रहा है. फिर हम पढ़ा देते हैं, अपना सिलेबस खत्म कर देते हैं. I'll not care whether you're studying or not, because that has to come from your side also. रेट करना क्या होता है? I gave you the example of Ola services in the last class. जब आप एक राइड बुक करते हैं तो उसमें रेटिंग मेथड कितना सारा रेटिंग का होता है. अगर आप सिर्फ वो राइड बुक करके कैंसिल कर देते हैं, इफ यू जस्ट बुक दैट राइड एंड यू कैंसिल दैट राइड, आफ्टर दैट दे विल आस्क यू plenty of questions. Why did you cancel the ride? Was the driver not on time? Did you expect a shorter waiting time? Did the driver deny it? Okay, was the why? Because on the basis of your feedback, they are going to appraise the driver. ठीक है, वो स्पेसिफिकली ये इस चीज को अलग करके क्वेश्चन पूछते हैं कि डिड यू एक्सपेक्ट अ शॉर्टर वेटिंग टाइम एंड दैट्स व्हाई यू कैंसल्ड, or did the driver deny to pick you up? Okay, after you've taken the ride, they ask you a question: was the driver wearing mask? Was the car clean enough? Was it hygienic? And many more things. What is this? And what do you do after that? You give a rating. You make it 3, or you make it 4, or you make it 5, depending upon how you felt. Right? You go to Pantaloons. Okay, you go to some mall. They'll ask you for rating. This is rating method. Okay, to rate you on certain parameters. Generally 5 to 6 parameters are taken. Examples are like dependability, how dependable you are; flexibility, how flexible you are; you on time? Okay. On the basis of innovation, did you suggest anything new? And things like that. Different organizations take it on their own will. They decide the factors. ये होता है रेटिंग मेथड. इसी दोनों को जब आप मिला देते हैं, critical incident method plus rating method will make it BARS method. Okay, both the methods combined will result into BARS method. आपने ध्यान दिया होगा कि ये दोनों मेथड ट्रेडिशनल मेथड में आता है, लेकिन जब इन दोनों मेथड्स को मिला दिया जाता है, it becomes a modern method. Why do we change methods? Because somewhere it is not able to cater to the needs of the current dynamism in business. That is why we shift to the modern methods, right? So now BARS method में behaviorally anchored rating scale, which means your behavior is going to be anchored with the rating that you're going to get. Earlier, it was just critical incident जहाँ पे बहुत सारा biases हो सकता था. हम चाहें, मेरे मैनेजरियल जजमेंट पे ये डिपेंड करता है कि हम चाहें तो सेम बिहेवियर पूजा ने किया तो हम उसको क्रिटिकल नहीं बोलेंगे, लेकिन सेम बिहेवियर आकृति ने किया तो हमने उसको क्रिटिकल बोल दिया. तो बहुत ज्यादा बायसिंग का स्कोप होता है. अंडरस्टूड?
Likewise, and this problem has been overcome, okay, in modern method of bars. Your behavior, which means that the area of critical incident has to be rated by the rater. So this is known as bars. A lot of banks are using this method. Understood? And especially if you see that the organizations which are into service sector, no, services को जो direct deal करते हैं, customers को जो direct deal करते हैं, उनकी वो generally ये method use करते हैं. जैसे cab services, वो इस चीज को use करते हैं. तभी आपको इतना रेटिंग करने के लिए बोला जाता है. वो सारी रेटिंग combined, it will make the report of performance appraisal of the person. Okay? समझ में आया बार्स मेथड? मैम हाँ, बोलो. मैम मैम क्रिटिकल मेथड में एक बात पूछना था. वर्बल कैन बी आल्सो क्रिटिकल इन द नेगेटिव सेंस. वर्बल फाइट. Verbal fight, हाँ, that is also critical. और ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉइज के साथ झगड़ा होना is not something which is very good about your personality. Okay, it is always going to be critical because this hampers the team spirit. Okay, this means you are not good in teams. I explained this to you in class that in today's time, a lot of emphasis is being given on how well you behave in team because teamwork has become very important. Gone are those days where your individual competencies were the only factor that could fetch you good rating. Now, a person who is working well with team and is less competent than a person who is probably very good when he is working alone will get more ratings. उसका appraisal ज़्यादा better हो सकता है. ठीक है? So this is the change of, because of the change of demand that business has come up with. ठीक है सोनल? Yes, ma'am. Okay, bars method. Now there's one more method, MBO. What is MBO in general? Management by objective. Who proposed this method? अमृत बताओ. क्या मैम? Who proposed objective MBO? किसने दिया था ये method? मैम नहीं पता. Okay. MBO was given by Peter Drucker. Peter Drucker gave it in 1954. The concept of MBO has been given by Peter Drucker in 1954. And taking this into performance appraisal method, this method was used in performance appraisal and it was taken further for development by Douglas McGregor. Okay? If you remember, Douglas McGregor की एक बहुत famous motivation की theory भी है, which is known as theory X and theory Y. Okay, theory X and theory Y. So, in this method, अच्छा job का description समझते हो तुम लोग? JD क्या होता है? Job description? यस मैम, जॉब के बारे में जो डिटेल्स लिखे रहते हैं. ठीक है, कभी देखिए वो job description? अभी आया था ना तुम्हारे ग्रुप में किसी कंपनी का प्लेसमेंट के लिए? Wait, let me check it out. मैम वो गवर्नमेंट जॉब्स के जो आते रहते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन दिया रहता है ना. It's not just limited to government job. It is also there in private jobs. अभी आपके पास जितना आएगा, कॉलेज जितने प्लेसमेंट्स वो बुलाते हैं, सब अपना अपना जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं. देखो, पहले ये समझो, बाद में MBO समझना. Job की analysis. There are 8 to 10 words in HR which start with job. You need to have clear-cut differences among those words in your mind. Job analysis, job description, job specification, job evaluation, job enrichment, job enlargement, and many more like that. Job analysis पे आओ. किसी भी जॉब का
किसी भी पोस्ट का बहुत एनालिसिस होता है, तब जाके इट क्रिस्टलाइजेस इन द HR format or the format of the organization. When we do complete analysis of any job, we see that there are two aspects of it, two parts of job analysis. The first is job description, and the second is job specification. आपको core HRM में ये सब पढ़ना होगा, definitely पढ़ना होगा. Job description and job specification. Job description का क्या मतलब होता है? What do you mean by description? Something that describes. So job description means that it is describing about everything related to that job. Something which a description which describes the job completely is job description. And the second part, job specification, which means everything which is expected from you or from the person who wants to join that job, who claims himself or herself eligible for that job, is known as job specification. समझ में आई बात? आ गई तो बताओ फिर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? बाकी लोग भी बताओ. जॉब डिस्क्रिप्शन का एग्जांपल सुनो. जैसे एवरीथिंग दैट डिस्क्राइब्स द जॉब, मतलब क्या क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है जॉब के बारे में? तुमको क्या क्या एंथुसियाज्म होता है जानने का? कहाँ लोकेटेड है? यस मैम. लोकेशन कहाँ है जॉब का? टाइमिंग क्या है उसका? टाइमिंग क्या है उसकी? CTC कितना देगा? यस कितना देगा? क्या नीड है? हाँ, मैम एलिजिबिलिटी कितनी? एलिजिबिलिटी ठीक है, रुको उस पे आते हैं. जॉब के बारे में क्या क्या जानना चाहोगे तुम? जब किसी जॉब डिस्क्रिप्शन आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तुम्हारे पास भी कोई आएगा ना, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा तुम्हारे ग्रुप में, देखना उसमें क्या क्या मेंशन किया रहता है. तुम्हारा मैम जॉब टाइटल ऑफ द जॉब, वेरी गुड. यस मैम, और क्वालिफिकेशन, प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन. Okay, no, that is not about job, that is specification. Job description में job आएगा तुम्हारा purpose. title, Yeah. your timing, the location of the job. Is there any safety and hazard thing involved with that job? ठीक है. Are you required to work in rotational shifts? ये चीजें job description को बताती है. Okay, कोई मशीनरी और मैम स्पेसिफिकली किस तरह? बोलो बोलो. यस मैम, किस तरह क्या are you required to run any machine? Are you required to take care of certain machines? Okay, वो हो गया job description. Specification माने जैसे जॉब के बारे में तुमने पूछ लिया कि जॉब का पोस्ट का नाम क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनी. अब इस मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है? इज BBA allowed? Only MBA is allowed? Are MBAs in specific domains allowed or required? ये हो गया जॉब स्पेसिफिकेशन. क्या किसी तरीके का स्किल रिक्वायर्ड है? जैसे आप IT के बहुत सारे जॉब्स के लिए जाएंगे, when you go for jobs in IT, you'll find that they give out the names of the degrees that you should have or the workshops you should have done, like Python, like you should have information about blockchain, you should have the knowledge of C++, Java, like this. Okay, SAP. Understood? ये डिग्रीज आपको चाहिए स्पेसिफिक. उसके बाद क्या कोई ट्रेनिंग चाहिए? ऐसी कोई ट्रेनिंग जैसे बहुत सारा सोशियोलॉजी का, अगर सोशियोलॉजी के पोस्ट पे जब रिक्रूटमेंट होता है ना, तो वहाँ 1 साल का रिक्वायरमेंट होता है कि you should have worked with, you should have been involved in some kind of social work for at least 1 year.
like which means that you should have been linked with some NGO or something. You should have some certificate from that organization. Understood? This is known as job specification. जैसे तुम्हारे लिए जॉब स्पेसिफिकेशन आएगा तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो लिखेंगे कि MBS रिक्वायर्ड है, तब तुम जानोगे कि तुम्हारी डिग्री उसके लिए एलिजिबल है. उसके बाद वो लिखेंगे कि कितना मार्क्स चाहिए, क्या 60% and above only they are required or below that can also apply. ठीक है? Is any kind of specific training required to do that job? क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए. जैसे आप कम्युनिकेशन रिलेटेड जितने भी जॉब्स में जाएंगे, relationship manager and all, they will specifically mention it in their job specification that good communication is required. English both in written and oral form, the person should be well versed in that. ये required. एयर होस्टेस, आप जहाँ पे भी वो थोड़ा अपीयरेंस वाला जॉब में तुम जहाँ जाओगे, जैसे कि थोड़ा सा जहाँ शोबिज बिजनेस है, जैसे एयरपोर्ट्स एंड ऑल, airlines and all, they will disguise it under, they cannot clearly say that we like charming people, they'll just disguise it under good people with good appearance are preferred. What does that mean? You should have a charming personality. Okay, this is also one of the job specification criteria depending upon the kind of job you're opting for. This is the difference between job description and job specification, which comes under job analysis. Got it? ठीक है. नेक्स्ट टाइम से किसी ऑर्गेनाइजेशन का JD आएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ना और समझ में आएगा. या हम क्लास में पढ़ा किसी का जॉब डिस्क्रिप्शन लाके तुम लोग को पढ़ा देंगे. अब आओ इस पे थ्योरी पे. MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि you are setting objectives and on the basis of achievement of those objectives you will judge a person, you will appraise a person. Got it? Now here you're not just setting objectives for the employees, in fact you're also setting those objectives for the employer. मतलब एम्प्लॉयर को ये पता है, ओके, एम्प्लॉयर ये जानता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, which means that what are the job descriptions, यानी ये जॉब में क्या क्या रिक्वायर्ड है, एंड एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके एक टाइम के बाद यू मीट योर बॉस. आप वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लीजिए और फिर अपने बॉस से मिलिए एक टाइम के बाद, जो ये बताएगा, ठीक है, जो ये बताएगा कि तुमने अपना गोल अचीव किया कि नहीं किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है MBO समझना, क्योंकि ये शायद तुम लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी रह गया था. MBO मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है. अप्रेजल में भी MBO इज वेरी इंपॉर्टेंट. जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी हम तुमको बताएं कि जॉब से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो एम्प्लॉयर, वो जो तुम्हारा बॉस है वो तुमसे डिस्कस करेगा. Your boss will discuss all those things with you and then they'll arrive at a common point that these are my objectives, you need to achieve these objectives in this much given time. और उसके टाइम के बाद आप उससे मिलते हैं बॉस से, और फिर आप ये डिसाइड, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने अचीव किया कि नहीं आपका अप्रेजल होता है. ठीक है. एक प्रॉब्लम इस मेथड के साथ ये होती है, देखो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में जो तुम्हारा बॉस है उसका भी की रिजल्ट एरिया डिफाइंड है, उसको भी बहुत सारा काम है, तुमको भी बहुत सारा काम है, वो तुम्हारा बॉस है उसको तुमसे ज्यादा काम है. हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो सारे लोगों से मिल पाए. ओके, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है. ओके, बट जहां हमने देखा था कि 360 डिग्री अप्रेजल मेथड में गोल की कहीं बात नहीं हुई थी कहीं गोल की बात नहीं. इट वाज मोस्टली फोकस्ड ऑन द बिहेवियर. ओके, तो जहां गोल की बात नहीं हुई, यहाँ गोल की बात होती है
because that will direct you more towards the work that has to be performed in the organization. Got it? समझ आया सबको? With this, we complete performance appraisal, the modern appraisal methods also. Now, why have we shifted from traditional methods to modern methods? क्या प्रॉब्लम्स थी, या अप्रेजल का इन जनरल हम प्रॉब्लम अगर ढूंढे, हर चीज अपने शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म के साथ आती है. So if we just discuss about the criticism, तो we'll find कि कुछ चीजें जो क्रिटिसाइज की जाती हैं ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में, उनमें से कुछ क्या है. जैसे देखो, हेलो का मतलब समझते हो तुम लोग? हेलो, हेलो एरर खोखला. नहीं, that is hollow, Amrit. That is hollow. HOLLOW. What you're saying is HOLLOW. What I'm saying is HALO. Hello. What is that halo? Halo impact. नहीं पता है. रामायण महाभारत कभी देखे हो? देखे होंगे, या फॉर दैट मैटर कोई भी माइथोलॉजिकल सीरियल्स आप देखे होंगे. उसमें कभी ये नोटिस किए हो कि जब भगवान को प्रोजेक्ट किया जाता है, when the producers of the serial want you to focus only on God, तो क्या होता है, जब भगवान कहीं से निकल रहे होते हैं तो उनके सिर पे एक चक्र बना दिया जाता है, you know, and that चक्र is full of light. होता है ये चीज, बहुत तेज रोशनी के साथ भगवान को प्रोजेक्ट करते हुए दिखाया जाता है. ये Yes, समझ ma'am. रहे हो कि नहीं? हाँ, यस और नो? ये Yes, देखियो, yes, yes. इतना नोटिस कियो. क्या इम्पैक्ट एज अ व्यूअर, जस्ट एज अ लेमैन व्यूअर, तुम सोचो, जस्ट एज अ लेमैन व्यूअर, टेल मी व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन योर माइंड? तुम्हारे ऊपर इसका क्या असर होता है? बताओ बिट्टू. बिट्टू Yes, ma'am. बताओ. Halo effect. Halo effect बताएं मैम. हाँ, मैम basically the positive impression of a person हो सकता है, मेरा positive sense में. पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ अ पर्सन. ठीक है, चलो एक हद तक ठीक है. बाकी I have given you a situation ना, कि वो भगवान जब निकलते हैं वहां से, and then that chakra thing, what does it have, I mean, how does it play with your psychology that time? तुमको नहीं लगता है कि उस स्क्रीन पे तुम कुछ भी नहीं देख पाते हो सिवाय उस भगवान के? ये होता है, आसपास उसके लोग खड़े रहेंगे, या पेड़ पौधा है, या अदरवाइज विच इज विजिबल, अदरवाइज विच यू नोटिस, लेकिन अगर वो चक्र दिखता है और भगवान का प्रोजेक्शन उस तरीके से किया जाता है, तो यू नॉट एबल टू सी एनीथिंग एक्सेप्ट, यू आर नॉट एबल टू फोकस रादर ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट दैट गॉड, राइट? दिस एरर इज आल्सो देयर इन परफॉर्मेंस अप्रेजल. यानी कि जिसको हम अप्रेज कर रहे हैं, जिस एम्प्लॉय को, उस एम्प्लॉय के किसी एक पार्ट को इतना हावी तरीके से एम्प्लॉयर अपने दिमाग में रखता है, एम्प्लॉयर मींस रेटर इतना के दिमाग पे, साइकोलॉजी पे इतना हावी होता है वो, कि वो बाकी उसका कोई फ्लॉ नहीं देख पाता. यू आर नॉट एबल टू, even if you want, you'll not be able to see any flaw in that person except that halo thing which is making you over the top. जैसे अगर रेटर को ये मालूम है कि ये बहुत रईस है, ठीक है, ये बहुत पैसे वाला लड़का है या लड़की है, एंड यू थिंक दैट क्योंकि बहुत पैसे वाला है, इसलिए आई एम सो चार्म्ड बाय his or her personality that I am not able to focus on the real work he or she did. और एग्जाम्पल, एक स्टीरियोटाइप का एरर जिसको आप बोलेंगे, जैसे कि हम ये मान लें कि सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं इसीलिए वो इंटेलिजेंट हो,
This is an error. Your IQ has nothing to do with a language. Okay? English could make you presentable. English could make you a little charming. But if I judge you only, English might be required, but if I judge you only on the basis of how well you speak or write English, this is an error on my part. And there are people who get blown away by this trait. Okay? और हम ये मानते हैं कि हिंदी मीडियम से जो बच्चे आए हैं या गांव से जो बच्चे आए हैं वो क्योंकि उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं इसलिए दे नॉट बी एबल टू परफॉर्म और इसलिए आई हैव यू नो इसलिए आई हैव गिवन अ प्रेजुडिस दैट even if their the way they have performed in the last 1 year is not as far with somebody who is smart in the sense of the language. Got it? इस तरीके का error. This is halo effect. The second error that you can have in performance appraisal is central tendency. Central tendency means I am a rater. I do not have time to know the best about you and the worst about you. I do not have time to dig into more details about how well or not you have worked in the past times. So I'll have a tendency to skip the chances or skip the risk of either rating you too high or rating you too low. Got it? Sorry. In that case, I'll find a middle path which is safer. Like I'll just rate you in central tendency. यानी बीच में तुम्हारी rating कर देंगे हम. It is always safe to give you 60, 65, 66, 67, 60. If I fail somebody or if I give them too high a marks, I'll be answerable. There are chances I would be called to answer, right? Right? ये होता है central tendency. Then there are more errors like leniency or strictness. Lenient मतलब बहुत liberal है. The rater is liberal. क्लास में आना तो इसका ग्राफ बना के बताएंगे तुमको कि जब परफॉर्मेंस अप्रेजल में ग्राफ क्लास में बताएंगे कि अप्रेजल में जब लीनियंसी देखी जाती है तो the curve is shifted towards the higher end of the graph and जब strictness होता है rater में the curve is shifted towards the lower end of the graph. ठीक है? इसके अलावा भी परफॉर्मेंस अप्रेज करने में मिसलेनियस एरर्स होता है. मिसलेनियस एरर्स में जैसे सपोज करो कि आई एम द मैनेजर ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, समवन एल्स इज द मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. जब आई एम द मैनेजर ऑफ एचआर डिपार्टमेंट तो हम ये सोचेंगे कि मेरे डिपार्टमेंट में अगर हम खराब रेटिंग करके दे दें किसी को तो क्या होगा, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी ज्यादा बढ़ जाएगी और मेरे डिपार्टमेंट के लोग पीछे रह जाएंगे. ठीक है, उस केस में हम आंख बंद करके अपने डिपार्टमेंट के लोगों का भी अप्रेजल ज्यादा बेहतर कर देंगे ताकि दूसरे डिपार्टमेंट से कंपैरिजन में मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को ज्यादा पैसा मिले. Another error that I am the appraiser. Who's the appraiser? Your senior, your manager or something. Now, the one who has been working for quite some time under that manager का एक self ego होता है. वो उस senior को खराब रेटिंग करते, इससे ये भी पता, this is reflection of this also, that person has not improved under your leadership. In that case, to help himself only, he will not rate badly a person who is more experienced. Understood? तो ये इस तरीके का miscellaneous error होता है. Got it? With this, we complete performance appraisal. And in the next class, if there is any doubt, you come up with a doubt and we'll start. I'll take one more topic which is very important. You should know it as a student also, but as a student of HR, you must know that, which is social security. Got it? Just wait and tell me your roll calls.
Roll number 1, Present, ma'am. 2, 3, Present, ma'am. 4, 5, 6. 5 present, ma'am. Okay, Six 7, present, 6 ma'am. present, 7, 8, 9. Ma'am, 8. Okay, I've marked Anurag present. Thank 10, you. Yes, ma'am. 11, 11, Present. 11, 12. Present. 11 is present? Yes. Okay, okay. 12, 13, 14, Yes, ma'am. 15, 16, 17. 17 present, ma'am. Okay, 18, 19, 20, Yes, ma'am. 20. 21 present, 22, 23, 24, Present, ma'am. 25. 21. 25, ma'am. Okay, 26, ma'am. okay, 27, 28, 29, Yes, 30, 28. 28. Ma'am, 27 भी है उनका unmute नहीं हाँ, है. 27 mark हो गया. 27 is present, 28 is present, 29 is absent, 30, Yes, ma'am. 31, 32. See you in the next class.